सो सो एक बात ये याद रखें कि अगर हमारा जो बजट है, ठीक है, अगर हमारा बजट जो है वो गवर्नमेंट के बजट्स कैन रन इनटू अ डेफिसिट, इट कैन बी सरप्लस और इट कैन बी बैलेंस्ड, राइट? So a budget deficit is a situation where government expenditures or public expenditures, they exceed your public revenue, that is government revenue. तो अगर 10 मिलियन का तुम एक्सपेंडिचर कर रहे हो और 6 मिलियन का तुम्हारा रेवेन्यूज है, तो 4 मिलियन का डेफिसिट है। सिमिलरली अगर पब्लिक रेवेन्यूज एक्सीड कर जाए पब्लिक एक्सपेंडिचर से, सही है ना, तो उसके बाद बस सरप्लस आ जाएगा। और अगर पब्लिक एक्सपेंडिचर एग्जैक्टली बराबर हो पब्लिक रेवेन्यू से, तो हमारा जो बजट होगा दैट वुड बी बैलेंस्ड, राइट? दैट वुड बी अ बैलेंस्ड बजट। अंडरस्टूड? इसको कॉपी कर लो, जल्दी से कॉपी कर लो सारा। So what is a budget? A budget is basically a government yearly planning या forecast. That is, जो भी गवर्नमेंट, अब ये जो प्लानिंग या फोरकास्ट होती है इसमें दो चीजें आती हैं। एक तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक स्पेंडिंग आती है, और पब्लिक स्पेंडिंग को फाइनेंस करने के लिए टैक्सेशन आता है, ठीक है? ठीक है, अब गवर्नमेंट के सोर्सेज होते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू के सोर्सेज, यानी गवर्नमेंट जो है वो रेवेन्यू टैक्सेस के अलावा भी कमाती है, अदर देन टैक्सेस। Although tax is the main source of revenue, but other than taxes, there are various other sources of revenue. That is, number one, privatization. If the government privatizes the state companies, that would again result into a large sum of money that will be flowing to the government. Right? Apart from that, the government may also earn incomes and revenues through its own state-owned firms. For example, government of Pakistan के पास क्या-क्या state companies है? पाकिस्तान रेलवेज है, वापडा है, स्टील मिल है, पाकिस्तान पोस्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है गवर्नमेंट की, पीटीवी, यूटिलिटी स्टोर्स, ये सब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। तो इनसे भी गवर्नमेंट रेवेन्यू कमाती है। ऑल्दो द ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, बट नाइदर द ऑब्जेक्टिव इज टू इनकर अ लॉस, राइट? सो obviously some form of revenues are earned. Number 3, income charged from rent that is charged to private sector in case any state owned buildings are rented to the private sector. अगर गवर्नमेंट की कोई बिल्डिंग्स हैं, गवर्नमेंट की अपनी बिल्डिंग्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर को रेंट पे देनी है, तो उससे जो रेंट आएगा वो रेवेन्यू या इनकम, बेसिकली इनकम होगी गवर्नमेंट के लिए, ठीक है जी? इसी तरह पार्क्स वगैरह होते हैं, म्यूजियम्स होते हैं, अगर उसके ऊपर कोई एंट्रेंस फीस चार्ज करी जा रही है, कोई एडमिशन चार्जेस हैं पार्क में या म्यूजियम के लिए जाने के लिए, तो उससे जो रेवेन्यू आएगा वो भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू का, पब्लिक स्टेट के रेवेन्यू का हिस्सा बनता है, ठीक है? ऊपर जो रेवेन्यू के सोर्सेज हैं वो रिलेटिवली स्मॉल है, यानी कोई बहुत ज्यादा रेवेन्यू उनसे कलेक्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है ना? सो दीज सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज कांट फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अगर बजट में डेफिसिट आ रहा है तो वो इन सोर्सेज से बेसिकली फाइनेंस नहीं किया जा सकता, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर अगर गवर्नमेंट का बेसिकली बजट डेफिसिट है, so budget deficit is basically, what is budget deficit? Budget deficit is a shortfall या deficit of revenue, right? तो गवर्नमेंट को, क्योंकि आपको पता है स्पेंडिंग करनी होती है, एक्सपेंडिचर्स करने होते हैं ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, हेल्थ केयर, मेरिट गुड्स, पब्लिक गुड्स, so government needs revenue for it. So apart from just the above sources of revenue, including the source of revenue that is tax, so there, apart from all the sources of revenue, still there might be a deficit in, and that deficit has to be then financed through borrowing. So as a result of that, the government finances that deficit through borrowing, right? So या तो international borrowing होती है, सही है ना, या तो internationally IMF, World Bank से borrow करेंगे, so that borrowing will be international, that is known as external, or it will be internal, that is domestic. अगर internal borrowing कर रहे हैं, domestic borrowing कर रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं public sector borrowing requirement. गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से पैसा बोरो करती है, इसको कहते हैं पब्लिक सेक्टर बोरोइंग रिक्वायरमेंट। एंड दिस बोरोइंग, बी इट इंटरनल और एक्सटर्नल, दिस इंक्रीजेस द नेशनल डेट ऑफ द कंट्री। इट बेसिकली इंक्रीजेस द नेशनल डेट ऑफ द कंट्री, एंड इट्स नॉट गुड। ऑल्दो यू कैन से दैट द डेट इज इंक्रीजिंग, बट एट द सेम टाइम गवर्नमेंट के पास पैसा भी तो आ रहा है गवर्नमेंट स्पेंडिंग करने के लिए। गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी तो इंपॉर्टेंट ही है ना यार, मतलब पैसा जाया तो नहीं कर रही गवर्नमेंट, राइट? तो गवर्नमेंट बेसिकली जब बोरो करती है, ये देखते हैं हम कैसे बोरो करती है। तो गवर्नमेंट अगर पैसा बोरो करती है, तो गवर्नमेंट किस तरह बोरो करती है? बाय इशूइंग, द गवर्नमेंट सेल्स
the government issues bonds basically. The government sells its bonds, that is known as government bonds. The government will issue bonds to the general public or the private sector firms, right? The government will issue bonds to the general public or private sector firms. What are bonds? Bonds are financial instruments, या उनको financial securities कह सकते हैं, financial stocks या financial securities. Suppose करो मेरे पास अगर 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, ठीक है ना, मेरे पास अगर 10 लाख रुपए हैं तो मैं 10 लाख का कैश रखूंगा, मैं जाके गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद लूंगा, तो ये 10 लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को दे दूंगा, मुझे बॉन्ड मिल जाएगा. बॉन्ड एक पर्चा होगा, पेपर होगा, और मैं बॉन्ड होल्डर हूं. मुझे बॉन्ड पे क्या मिलेगा? हर साल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मुझे इंटरेस्ट देगी बॉन्ड के ऊपर, तो मेरा फायदा है ना, मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है हर साल. और बॉन्ड की हो सकता है डेट हो 5 साल, 10 साल, 15 साल. 5 साल बाद बॉन्ड मैच्योर हो जाएगा तो गवर्नमेंट मुझे ये 10 लाख रुपए वापस कर देगी. ठीक है जी, क्लियर हो गई बात? और हर साल मुझे इस पे इंटरेस्ट मिलता रहेगा. सो दिस इज अ फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट आई कैन मेक by giving money to the government, and the government will use that money to finance its expenditures. ठीक है जी, clear? Is this clear? What is national debt? National debt is the total debt owed by the country that is represented by the total amount of money borrowed, be it internal or be it external. A rise in national debt increases the debt to GDP ratio. ठीक है, remember that. A high debt to GDP ratio that I've mentioned over here is not good. A high debt to GDP ratio, guys, is not good. Okay, you can't have a high debt to GDP ratio. It's not something that is positive or healthy for the economy. तो ये तुम लिख सकते हो. गवर्न आपके पास पास्ट पेपर्स में बहुत कॉमन सवाल है, बहुत कॉमन आता है सवाल. डिस्कस वेदर अ राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस इन्फ्लेशन. डिस्कस वेदर अ राइज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग विल रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट. वेरी कॉमन क्वेश्चन, 8 मार्क्स का आ रहा होता है. तो उसके अंदर जब तुम गवर्नमेंट स्पेंडिंग के एडवांटेजेस लिखोगे तो फिर तुम्हें गवर्नमेंट स्पेंडिंग के डिसएडवांटेजेस में ये देना पड़ेगा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग रिजल्ट्स इनटू अ बजट डेफिसिट. बिकॉज इफ द गवर्नमेंट स्पेंडिंग राइजेस, the amount of spending made will exceed the revenues of the government, and hence the government will borrow money, and that will increase not only national debt, it will also increase the debt to GDP ratio. तो ये लिखकर आओगे तो मैं अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ठीक है, क्लियर हो गई बात? I've written that the government has to pay. So debt to GDP ratio का फॉर्मूला भी मैंने दिया हुआ है. That is total national debt divided by total GDP, that is national income. So debt to GDP ratio is measuring your debt as a proportion to your incomes that you have earned. So for example, if Kashif earns $100,000 a month, so he'll be very proud of himself. But at the same time, he's also sad because out of $100,000 he earns, he has to pay $30,000 back to the bank because he had borrowed money for it. So again, it's not making him better off. It's making him a bit less better off, or maybe a bit worse off as well, because he's not getting that 30,000 rupees in his pockets. He's giving them as loan, as repaying his debt back. So debt to GDP ratio आपका क्या measure कर रहा है? आपका debt measure कर रहा है as a proportion to GDP. ठीक है ना? Higher debt to GDP ratio is not a good sign for the economy. However, it does not mean that it's always not a good sign, because usually this debt arises because the government has borrowed money to finance its spending. So in the short term it may look bad, but in the long run, it will benefit the economy. Why? Because the government will be using this money. The government will invest this money into different projects, in infrastructure, merit goods, public goods, and this will generate revenues and incomes for the government. And in the long run, the government will be capable enough to repay all the money back. And not only that, it will generate employment, it will generate incomes, all of that stuff. So ये सब भी आप लिख सकते हैं. So ये बड़ा common question है past papers का, जिसका ये basically, so you need to evaluate. All of this stuff will be written जब आप बता रहे होंगे government spending के बारे में. So basically the whole idea is कि जरूरी नहीं है कि अगर आपकी national debt बढ़ रही हो तो you're worse off, because the thing is that if national income or GDP rises faster than total debt, so agar, for example, agar government ने borrowing की है, if the government borrows debt, and if the government uses this debt
and invest this money back on the economy, which increases GDP. But if the GDP is rising faster than the amount of debt that the government has taken, in that case, basically the overall national debt and the interest payments attached to it is not an issue, right? Since GDP and national income is rising faster, then the tax revenues will rise. You understand or not? तो इसमें हो क्या रहा होगा? इसमें हो ये रहा होगा कि जितने अमाउंट से, so basically तुम्हारी जो ओवरऑल नेशनल इनकम है वो तेजी से बढ़ रही होगी, ठीक है, which will be sufficiently enough to repay the interest on those debts. And it's only when it will be a large pressure or burden on the economy only if the national debt is greater than the rise in GDP. यानी तुम्हारी जो ओवरऑल डेट है अगर वो तुम्हारी जीडीपी से ज्यादा है तब तुम्हारी इकोनॉमी के ऊपर प्रेशर होगा, वरना प्रेशर नहीं होगा तुम्हारी इकोनॉमी. बिकॉज although yes we agree that you have debt, but again that debt will be repaid by the amount of national income that you earn in the economy subsequently in the long run. That is what it's written over here, that you know this is how you have to evaluate government spending in your exams. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये बात सबके समझ में आ गई है? एनी क्वेश्चन still here? Then we move to direct indirect taxes.